Welcome to Vanik Smart Class. Today we will discuss some questions belongs to that is simple interest. That is also most important chapters. So we'll discuss some questions belongs to that simple interest. So we have a very common formulas to solve all the questions belongs to that simple interest, and that formula is you write here simple interest SI, that is PRT by 100. That is the one and only one formula to calculate all the formulas based on that simple interest. Simple interest, that is PRT by 100. So P stands for, that is principal, R for rate, and T for time. Another one, that is A stands for amount. जोटा कि आम ओडिया मीडियम रे पढ़ुले स्कूल रे ताको जे समूल सुध मूलधन युक्त सुध मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज नोन एज अमाउंट. ओके, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. बट वी हैव टू कीप इन योर माइंड आम गोटे जिन ध्यान देवा पड़ो. नॉर्मली रेट इज गिवेन परसेंटेज पर आनम. रेटा सब परसेंटेज पर आनम रे दिखाई था. तो रेट जदि परसेंटेज पर आनम दिखाई टाइम रे यूनिटा सब आम आवर फॉर्मेट, टाइम रे यूनिटा सब आम ईयर फॉर्मेट रे लिखा. ता माने आम सब ध्यान देवा पड़ो रेट आउ टाइमिंग दीटांकर यूनिट समान थिबा दरकार. रेट जदि परसेंटेज पर आनम देथिबो टाइमिंग टा आनम फॉर्मेट P and other one is R and third one is T. Principal equal to simple interest into 100 by R into T. R equal to similarly simple interest into 100 divided by P into T, and T equal to simple interest into 100 divided by P into R. These are three derived formula from that basic formulas PRT by 100. Okay, again I am repeating. Gotiye matra formula simple interest, that is PRT by 100. P stands for principal, R for rate, T for time. A stands for amount, that is principal plus interest. खाली गोटे जिन आमको ध्यान देवा पड़ो कौन, रेट आउ टाइमिंग रो यूनिट टा दीटा समान थिबा दरकार. रेट टा नॉर्मली परसेंटेज पर आनम दिखाई था, जोटा कि टाइमिंग टा को आमको ईयर फॉर्मेट रे लिखिया पे सबले पड़ो. नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस बिलोंग्स टू दैट. Question number 1. Find the simple interest on 24,000 rupees at the rate of 12.5% per annum after 3 years and 4 months. लिखला में simple interest equal to principal which is 24,000, rate is 12.5. Next the question is about timing. Timing लिखा है 3 years 4 months. 3 years रहिला 4 months टाकू आमे लिखिबा 4 by 12 years. रिसेंटली आमे कथा हेतले टाइमिंग टाकू आनम फॉर्मेट रे लिखिबा. सो जो 4 months लिखा अछि ताकू ईयर करिया पई डिवाइडेड द नंबर by 12. सो दिस इज कमिंग हाउ मच 3 whole 1 by 3, दैट इज कमिंग हाउ मच 10 by 3. टाइमिंग आसीगला 10 by 3. टाइमिंग जगह आम लिखिदेवा चलो 10 by 3 into 100 PRT by 100. 12.5 टा 100 रे कटिगले डायरेक्टली 8 आसीबो.
8 3 24 कटिगला 24,000 1000 1000 into 10 that is 10,000 given option number A is the right answer 10,000 clear जीवा क्वेश्चन नंबर 2 Question number 2, find the amount लिखा है देखो previous question is asking about simple interest but here is question is asking about the amount. Find the amount on 73,000 rupees 10% per annum simple interest after 200 days. Time is given 200 days. So write simple interest formula PRT, principal is 73,000. रेट तो दिखाई 10 टाइम जो दिखाई 200 डेज डेज टाकू ईयर कले नॉर्मली डिवाइड द नंबर 365 हेला पी आर टी बाय 100 तो जिते बड़े आमे डेज टाकू ईयर को कन्वर्ट करचंती वी आर डिवाइडिंग द नंबर बाय 365 सो वन क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड गोटे ईयर कौन 365 डेज sometimes it come also 366 days in case of a leap year so leap year कथा मेंशन करी नहीं माने आमे leap year concept को जीवा नहीं normal year concept that is 365 days नहीं करिवा so 365 into 2 हेगला 730 365 into 2 हेगला 730 then 100 cancel here 2 then this is coming how much 2 into 200 that is 400 into 10 4,000 is the interest choice number 1 ने 4,000 अच्छी टिक चिन्ह मार देले एटा भूल है जीव because here question is asking about the amount so amount means we know principal plus interest the principal is 73,000 interest is 4,000 so that is coming how much 77,000 given option number B that's the right answer ठीक है केयरफुल खेले में देखिए वेरी इजी क्वेश्चन समस्त ये क्वेश्चन आसी पारियो वेरी इजी क्वेश्चंस बट क्वेश्चन लास्ट स्टेज रे कोन पचारची अमाउंट पचराई छी जदि हम इंटरेस्ट बाहर करिवा भूल आंसर एक नंबर चॉइस रे थिवो नॉर्मली कौन हुए इफ योर आंसर इज नॉट इन द चॉइसेस से केस आम दुथर ट्राए करती आउ थे रिचेक करदे आमर काले भूल हो गला बट इफ योर आंसर इज इन द चॉइसेस आम किए भावते नहीं जे आमर भूल है बोली आम राइट चिन्ह मारदे पलैबा व्हिच इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट भलसे क्वेश्चन पढ़ो आराम से पढ़ी आम सॉल्व करिया जीवा चला क्वेश्चन नंबर 3 Number 3, rupees 30,000 produced a simple interest of 6,000 in 3 years. Find a rate. Rate of formula just we have discussed. Rate of formula which is simple interest into 100 divided by P into T. Simple interest which is 6,000 into 100 divided by P into T. P is 30,000 and timing is given 3 years. Simple interest into 100 divided by P into T. 6,000 cancel here. 5 cancel here. 20 by 3. 20 by 3 is coming 6 sold 2 by 3% per annum. 6 sold 2 by 3% given that is in option number C. Clear? जीवा में next question number 4. Number 4 rupees 32,000 amounted to underline that word amounted to 40,000. So 40,000 is the amount here. Whereas principal is 32,000. How to find interest? You have to subtract the number. So first you write simple interest that is 40,000 minus 32,000
it is coming 8,000. 8,000 is the simple interest. Then you are asking find the timing. Timing ro formula, that is simple interest into 100 divided by P into R. Simple interest got it 8,000 into 100 divided by principal. Principal kete lekha hai 32,000 into R. Rate kete lekha hai dekho 6 whole 1 by 4%. 6 whole 1 by 4%. ठीक अच्छी 6 whole 1 by 4% GA 1 by 16 CA means 6 whole 1 by 4% यदि 100 रे कटि जीवो डायरेक्टली आसी जीवो 16 आमको किसी फ्रैक्शन मन रखिया पे पड़िबो टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज क्विक एज पॉसिबल कहि दवा नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कहि दे केतरा फ्रैक्शंस मन रखिबा पई तो 6 1 by 4% 100 रे कटले इज कमिंग 16 एटा लगते 8,000 एटा कटि गला that is 4 then 16 by 4 it is coming 4 years. Answer option A is given 4 years. तो आमे जिबा किछि फ्रैक्शंस मन रखिबा केमती 1 by 2 1 by 2 is 50%. 1 by 3 that is 33 whole 1 by 3%. 1 by 4 it is 25%. 1 by 5 is 20%. 1 by 6 16 2 by 3%. 1 by 7 14 2 by 7%. 1 by 8 12.5%. 1 by 9 11 full 1 by 9%. 1 by 10 that is 10%. 1 by 11 9 full 1 by 11%. 1 by 12 8 whole 1 by 3%. 13 14 मन रखिया दरकार नहीं 1 by 15 6 2 by 3%. 1 by 16 6 1 by 4%. ये केतटा फ्रैक्शंस को हमको मन रखिया पे पड़िबो एडिशनल आउ दुटा मन रखिया पड़िबो 1 by 3 जदि 33 1 by 3 हला देन 2 by 3 केता आसीबो ना 66 2 by 3%. द कॉमन फ्रैक्शंस यूज करा जाए. सिमिलरली एठी देखो 1 by 8 आमे लिखथिले 12.5%. परीक्षा फ्रिक्वेंटली 3 by 8 आसे 3 by 8 that is 37.5%. 1 by 5 लिखा है 20%. फ्रिक्वेंटली आसे 2 by 5. 2 by 5 is 40%. आमे केतरा फ्रैक्शंस यदि मन रखिबा बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे. रिलेटेड मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ए प्रकार क्वेश्चंस को आमे फ्रैक्शंस यूज करी बहुत इजीली कर दे परिबा. सपोज क्वेश्चंस पचारला कि 24,000 रो 12.5% केते हबो. आमे जानि चंदे 12.5% जे 1 by 8 से डायरेक्टली 24,000 रो 1 by 8 केतना 3,000 आराम से बाहर जाई परिबो. वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट. सिमिलरली पचारिबो 120 80 80 टा 120 रे केते परसेंट 80 टा 120 रे होची केते ना 2 by 3. 2 by 3 जे आमे लेक्चर दे 2 by 3 जे दैट इज 66 2 by 3%. आमे किछि घुसी देबा. घुसी देले कोन हबो यू कैन रिमेंबर सम फ्रैक्शन टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज क्विक एज पॉसिबल. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 5. What question? The simple interest on a certain sum is equal to 16 by 25 of the principal. If rate percent per annum is equal to time period in years, find the time. First देखो information कौन दिया है. Simple interest on a certain sum
मीन्स एसआई एसआई केते लिखा अछि इज इक्वल टू 16/25 of the principal 16/25 of the principal लिखिदेल SI equal to 16/25 P और इंफॉर्मेशन कौन दिया है रेट परसेंट पर annum means R equal to केते लिखा है टाइम पीरियड इन इयर्स दैट्स इक्वल टू T. So these are two informations given to us. SI that is 16p/25 and R equal to T, and you are asked to find the timing. Timing पचराला. तो आमर फॉर्मूला द यूनिक फॉर्मूला हमको जना अछि सिंपल इंटरेस्ट that is PRT/100. Instead of simple interest आमे चलो ये फिगर टा लिखि दवा that is 16p/25 P जगह P रहिला R equal to T R जगह T लेख T जगह T लेख by 100 ठीक है then PP cancel 25 cancel 84 T square is coming 16 into 4 that is 64 T is coming 8 T square is 64 T is coming 8 and you are asked to find out timing and timing is given here that is given here 8 years is the right answer. Okay 8 is right answer is 8. ए प्रकार क्वेश्चंस रे आउ टिके मॉडिफिकेशंस बेले बेले पड़े एंड द मॉडिफिकेशंस आर लाइक दैट जस्ट खाली यार आउ गोटे कॉपी आमे करिवा क्वेश्चन दिहाइतिबो SI equal to 49p/81 T equal to 4R find R सेम मॉडल एडिशनल क्वेश्चंस गोटे आम देल दैट इज योर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 49p/81 T equal to 4R फाइंड R आम केमती सॉल्व करिवे सेम फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट जगह रे आम लिखिदेले 49p/81 इक्वल टू PP रहिला R जगह रे R रहिला T जगह रे आम लिखिदेले 4R given T equal to 4R PRT/100 over PP cancel R cancel 4 cancel here 25 then R square is coming how much 49 into 25/81 R is coming 7 into 5/9 35/9 that is coming how much 27 3 whole 8/9% is the right answer 3 whole 8/9% clear jiva next question number 6 A certain sum becomes 3 times in 25 years at SI find rate percent per annum. एटा में से फॉर्मूला न पकी डायरेक्टली केमती क्वेश्चन देखला हम करि परिबा ए सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स लिखा है सपोज आ गोटे मेथड्स हम जानि थिया दरकार जो माने फॉर्मूला इंटरेस्ट नहे बिना फॉर्मूला रे केमती करिवा सपोज प्रिंसिपल हम नै गेले लेट प्रिंसिपल नै जा 100 रुपीस let a certain sum becomes 3 times लिखा है आम 100 रुपीस बैंक रे रखी सेटा 3 टाइम्स मैंने 300 टंका है 100 रुपीस टा 300 टंका है लिखा है 3 टाइम्स 100 रुपीस टा 300 रुपीस है माने आम इंटरेस्ट केते पाइले ना 200 रुपीस पाइले इंटरेस्ट ना नहीं 100 रुपीस रखी बैंक रे 3 टाइम्स है 300 टंका है 300 टंका आमर तो 100 टंका अच्छी मूल पैसा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पाइले 200 टंका केते वर्ष रे
ना 25 वर्ष सीधा डिवाइड कर दियो इजिली रेट इज कमिंग हाउ मच 8%. 200 by 25 it is coming 8% is the rate of interest. Understood? ए प्रकार क्वेश्चंस आ गोटे कर चलो करबा हमें सॉल्व करबा लेवल. A certain sum becomes 3 times लिखा हिनी सपोज 3 times जगह आम लिखिले एठी केते 4 times लिखिले. Certain sum becomes 4 times in एटा करेक्शन कर देले लिखले 30 years. 30 years आड एसआई फाइंड रेट. तला में से फॉर्मेट पके केमती करबा. Certain sum becomes 4 times 100 टंका रखिचंती 400 टंका है गला ताले इंटरेस्ट केते ना 300. ओके इंटरेस्ट इज कमिंग ओनली 300. 300 इंटरेस्ट पाइले 30 इयर्स रे पर ईयर केते 10. रेट इज कमिंग हियर 10%. कि बुझा पड़छ ना नहीं. आउट दवा मॉडल प्रैक्टिस पई 3 टाइम्स काटिबा 5 टाइम्स लिखिबा. 25 इयर्स काटी देले लिखले एठी 40 years find rate. Certain sum becomes 5 times. 5 times पने 100 rupees टा 500 टंका है गला. 500 टंका हैला माने इंटरेस्ट केते पाइले 400. कारण हम 100 टंका अछि माइनस करिया 400 rupees interest you can get in 40 years. Rate is coming 10%. Okay. A question टा ठीक है modification भी हुए. Modification means कौन? Here you are asking find the rate पचाला. एडी rate पचाला. Sometimes reverse questions may be asked. Reverse questions कौन? ना लिखा है वो a certain sum becomes 3 times in 11 years. ठीक है मॉडिफाई कर दवा. A certain sum becomes 3 times in 11 years. After how many years? After how many years it becomes 9 times. पूरा क्वेश्चन से हमें चेंज कर दो. A certain sum becomes 3 times in 11 years. बेटर हम ये लिखी दवा क्वेश्चंस लिखी दूची. A certain sum becomes 3 times in 11 years. Add SI. Full stop. After how many years? After how many years it becomes 9 times. पूरा क्वेश्चन तार फ्रेम चेंज कर दला. फॉर्मेट किंतु सेम. फ्रेम चेंज होला किंतु सेम फॉर्मेट रे हम करिवे. आमे 100 रुपीस रखिछन. That is principal. How much interest we got? Certain sum becomes 3 times. रखिछन 100 रुपीस हे गला 300. तो इंटरेस्ट पाइला में 200. 200 रुपीस पाइबा पई हमको टाइमिंग लागला 11 इयर्स. लिखले 11. क्वेश्चन पचारची आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? After how many years it becomes 9 times. Question is asking 9 times means आम 100 रुपीस रखिथिबा पाइबा 900 टंका रखिथिबा 100 पाइबा 900 ताले इंटरेस्ट केते पाइले 800 टंका. इंटरेस्ट पाइबा पाई केते वर्ष लागिवो? वेरी इजी. 200 पाउचंदी 11 इयर्स रे 800 पाइबा केते इयर्स रे मल्टीप्लाई हे गला. 200 into 4 हला 800. 11 into 4 that is coming 44 years. Okay, certain sum becomes 3 times in 11 years. After how many years it becomes 9 times? Your answer is coming 44 years. ठीक है.
अब टिके मॉडिफाई करवा चलो जीवा ए 3 टाइम्स टाकू 11 इयर्स टाकू 9 टाइम्स एटा को हम इरेज कर दल आउ टिके क्वेश्चंस को मॉडिफाई करवा चलो लिखवा ए सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम्स a certain sum becomes 4 times in 20 years. After how many years it becomes 16 times? ये है क्वेश्चन हम सॉल्व करिवा तो प्रिंसिपल नहीं गले 100 becomes 4 times 100 टंका 400 टंका है तो इंटरेस्ट पहला में 300 इंटरेस्ट पाए 20 इयर्स दरकार आफ्टर हाउ मेनी इयर्स बिकम 16 टाइम्स आम 100 टंका डिपोजिट करिसंती सेटा 1600 टंका है जो 1600 तले इंटरेस्ट केते हबो ना 1600 माइनस 100 दैट इज कमिंग 1500 300 रे 5 मल्टीप्लाई कले 1500 तमे 20 रे 5 मल्टीप्लाई कर दिया 100 इयर्स 100 years is the right questions for this additional questions. Understood? Okay. जीवा चलो next varieties. Question number 7. लिखा है जिस सेम जोरा में कथा है सही क्वेश्चन सची. A certain sum becomes 4 times in 20 years. After how many years it becomes 16 times. Exactly same questions recently में कले जोरे कि आंसर आसला हमर केते ना 100 years is the right answer. Same questions. Next चलो जीवा number 8. Question number 8. A bank gives a simple interest of 4% for first 2 years, 5% for next 3 years, 6% beyond 5 years. After 7 years, if a person receives a simple interest of 10,500, find the principal. That is the questions for you. So, आमे ताकू x पकी कर दी परिवा 100 टेक भी कर दी परिवा दीटा प्रोसेस आमे कथा हवा जोटा भल लागिवो you can adopt that methods. जदि आमे x नोचंदी प्रिंसिपल x ला प्रिंसिपल then 4% first 2 years. X into 4 into 2 by 100 plus same X रा 5% rate पड़िला next 3 year. X into 5 into 3 by 100 plus same X रा 6% beyond 5 years. Beyond 5 years माने कौन? Beyond 5 years माने 5 वर्ष परे बियॉन्ड 5 माने 5 वर्ष परे आउ जेतिकी वर्ष रहिबो बैंक रे एंड द बैंक चार्जेस इज हियर केते लिखा अछि 6% एक्स्ट्रा जिते वर्ष रखिबो 5 वर्ष प्लस माने द 7 इयर्स रखिबो एक्स्ट्रा 2 इयर्स पड़िबो 6%. तो द 7 इयर्स लिखा अछि 7 इयर्स रो हमें बियॉन्ड 5 इयर्स माइनस कले आउ एक्स्ट्रा रहला 2 इयर्स 2 years rate पड़ला 6%. that is given calculation कले केते आसला it is 10,500 given लिखा है 10,500 सॉल्व कर दले easily you can find x is coming 30,000 आंसर आसियो. ए प्रोसेस न करी हम 100 रुपीस नेकी कर दी परिबा. लेट प्रिंसिपल नबा चलो 100 रुपीस फर्स्ट 2 ईयर रेट लिखा है 4% केते टंका पाइबा मल्टीप्लाई कर दियो 4 into 2 8 टंका पाइले. नेक्स्ट 3 ईयर रेट पाइले 5% लिखा है 5% 5 3 15 टंका पाइले. 5 वर्ष गला आउ केते वर्ष अछि नाउ बड़ी 2 वर्ष कोड असला 2 इयर्स टोटल 7 इयर्स लिखा अछि
सो रेस्ट जो 2 years रहा तार रेट ऑफ इंटरेस्ट पकेला में 6%, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, दैट इज 12. ये नंबर सब ऐड कर दिया, 12 plus 8 plus 15, that is coming 35 rupees is the interest. So 35% that is given. How much given? 10,500 given. यदि 35% 10,500 हुए ताला 100% टा केते 10,500 इंटू 100 by 35 35 3 हला 105 कटि गला 30,000. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, समटाइम्स सेम प्रकार क्वेश्चन को टिके ट्रिक क्वेश्चन पचार दब यही फॉर्मेट रे करवा जीवा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टिके खेला करेक्शन करवा. ए बैंक गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एटा काटिले 5% लिखिले फॉर फास्ट 3 years. 5% फॉर फास्ट 3 years कर देले. एटा काटिले आमे कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दा सो दैट इजिली विजिबल. मेक इट ब्लैक. बैंक गिव्स इंटरेस्ट ऑफ 5% फॉर फास्ट 3 years. एटा 6% कर देले. 6% फॉर नेक्स्ट 4 years एंड 7% लिखुचे. ए बैंक से क्रमजी गला बेसी. बैंक गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% for first 2 years, 3 years. 6% for next 3 years and 7% beyond 7 years. If a person receive a total amount of 96,000, then find P. प्रिंसिपल केते पचाला. फाइंड P. एक प्रकार क्वेश्चन आम सॉल्व करवा. प्रिंसिपल नहीं गला में 100 rupees लेट. फास्ट 3 year रेट लिखा है केते 5% फॉर फास्ट 3 year. 5 मल्टीप्लाई कर देले 5 3 15 टंका. नेक्स्ट 4 years. नेक्स्ट 4 years रेट केते लिखा है देखो 6% फॉर नेक्स्ट. एटा 4 years लिख दिया. 6% फॉर नेक्स्ट 4 years 624 टंका. तो ये ला 3 years, ये ला 4 years, 7 years गन. टोटाल लिखा है केते? टोटाल लिखा है पर्सन रिसीव अमाउंट ऑफ 96,000. आफ्टर इट ऐड कर दवा आफ्टर 10 years लिख दिया. तो 7 वर्ष गला परे जो 10 years लिखा है एक्स्ट्रा और रहा केतना 3 years. 3 years रो रेट ऑफ इंटरेस्ट केतना 7%. सो दैट इज कमिंग हाउ मच 21. जब मैं ऐड कर दवा हाउ मच कमिंग 5 5 10 60 rupees आसला इंटरेस्ट. एबे आसला इंपोर्टेंट जिस कौन पा हमें क्वेश्चन टा डिस्कशन कले. इन व्हाट वेज दिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन गिवन रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चंस. प्रीवियस क्वेश्चन में ये कौन थिला ना इंटरेस्ट दिखाई 10,500 कि आमे जो पाई 96,000 ये प्रीफिक्स कौन अच्छे देख लो. एटा अमाउंट लिखा है. दिस वन अमाउंट
This is the difference between these additional questions and the main questions. Here is given amount. Instead of amount, if here is mentioned simple interest, then you can write previous format 60% equal to 96,000 and your 100% must be 1,60,000. Those answers coming 1,60,000 is absolutely wrong because of that prefix only. Here amount is given 96,000. That means the last line will be like that. 60% is the interest, 100% is the principal, then your amount is coming 100 plus 60, that is 160%. Right? 160% equal to 96,000. Then 100% will be 60,000 only. That is the right answer. Answer is 60,000. Instead of amount, if here simple interest is mentioned, then your answer will be 1,60,000 may come here. Over. Your next variety is question number 9. Number 9. A person deposited a certain sum in a bank for 2 years at a certain rate of simple interest. If the rate is higher by 3% per annum, he will receive 3,000 rupees more. Find the principal. This is most interesting questions. First time traditional way jiba बुझे देवा concept टा तापर में short method को जिबा how to solve the questions as quick as possible. The traditional concept is that principal हमको जाना नहीं, principal टा को P नहीं गले, rate भी तो जाना नहीं, rate टा को R नहीं गले, केवल timing टा जाना अच्छा हम. Timing लिखा है 2 years. P into R into 2 by 100. This is the original interest. एतिक interest में आगुरु पाऊ थले. क्वेश्चन कौन कही देख ए पर्यंत लाइन आमर फिनिश हो गला. ए पर्सन डिपोजिटेड ए सर्टन सम इन ए बैंक फॉर 2 years एट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ओवर. कौन है तापरे इफ दी रेट इज हायर बाय 3% पर annum, रेटा जहाँ थिला रेटा आर थिला बर्तमान रेटा आमर बढ़ी गला. प्रिंसिपल अच्छी आज यूजुअल रेट जगह आम लिखदेले आर प्लस 3 लिखा अच्छी इफ द रेट इज हायर बाय 3% पर annum, रेट जहाँ थिला आम 3% ऐड करदेले इंटू 2 by 100. This is your new interest. This is your new interest and this one is our old interest. New minus old, that is given how much? Given 3,000 rupees. It was the concept. PRT by 100 is the original interest. This is P into R जगह R plus 3 लगे दिले बाकी as usual new interest. The difference is 3,000. But it problem कौन होगा देखो, we have two variables. Mark करो. P is a variable, R is a variable. Dita variable अच्छी गोटिए equations. From the school levels, we have a knowledge about that. If two variable is there, we need two equation to solve. If one variable is there, then we need one equation to solve. गोटिए equation रे जदि दीटा variable थिबो ताले questions केवल solve ही परिवा कथा नुहे. But there is a condition of solve. गोटे condition में problem solve ही पारिबो. कौन से concept? Now the concept is that during the solution, if one variable vanishes, कटी जो पूरा, then one variable remain. जी रहिला, this can easily find out. जो variable कटी गला से बाहरी बार संभावना नहीं, that is data inadequate or cannot be determined. बुझेला conditions. Again I am telling the conditions. जदि गोटे इक्वेशन थी दीटा वेरिएबल थी ताल केमती सॉल्व हम ना आम सॉल्व कला बेले जदि गोटे वेरिएबल भैनिश हो गला कटी गला वन वेरिएबल रिमेन. जो वेरिएबल रहिला दिस कैन इजिली फाइंड आउट. जो वेरिएबल कटी गला से बाहरी पारिबो नाही, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड. दैट इज ओनली वन कंडीशन ऑफ सॉल्व. एबे क्वेश्चंस तो माइंड रे आसी पारे कि सर जदि दीटा वेरिएबल रहिला कई कटिले नहीं ताले कौन करिवा दीटा कैन नॉट डिटरमिन कई बाहरियो नहीं.
नेक्स्ट क्वेश्चन arises जदि दीटांग कटिगला ताले कौन करिबा सेम रिजल्ट्स कैन नॉट बी डिटरमाइन ओनली वन कंडीशन ऑफ सॉल्व वन वेरिएबल रिमेन अनदर कैंसल नाउ प्रोसीड ऑन टेक 100 as LCM then this is coming P into 2 into R 2PR P into 3 into 2 6P minus 2PR equal to 3000 minus 2PR plus 2PR cancel. Principal is coming how much 50,000 50,000 principal 50,000 given option number A is the right answer. Principal पचारची find the principal बाहरी गला जब सेम क्वेश्चन रेट पचार था रेट है कैन नॉट डिटरमाइन डाटा इनएडिक्वेट केबेले रेट बाहरी पारिबो नहीं कौन पई ना रेट देखो बाटर कटि जाए नहीं तो रेट बाहर केमती कटिगला सो इन दैट केस प्रिंसिपल कैन इजिली फाइंड आउट 50,000 रेट कैन नॉट बी फाइंड आउट दिस इज द कॉन्सेप्चुअल मेथड्स एटा कॉन्सेप्ट आम क्वेश्चन टाक सॉल्व कले कॉन्सेप्ट क्लियर हो सारा पर पुणे आम चिंता करवा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज क्विक एज पॉसिबल केमती आम फास्ट करवा एंड द क्विकर प्रोसेस इज दैट सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 3 into 2 टाइमिंग इंटू रेट दैट इज कमिंग 6% लेख सीधा 6% इक्वल टू 3000 100% के आराम से आंसर आसीगला 50,000 आउ थे कहूँ टाइमिंग सहित रेट को मल्टीप्लाई करदेल इट इज कमिंग 6% इक्वल टू 3000 टंका कौन पे मल्टीप्लाई कर बुझा दरकार रेटा 3% बढ़ीगला रेटा 3% बढ़ीगला माने 100 रुपीज प्रिंसिपाल आम जी इंटरेस्ट पाते 3 टंका अधिका पाइबा यदि वर्ष को 3 टंका अधिका पाइबा 2 वर्ष में 6 टंका अधिका पाइबा 6 रुपीज मोर सो दैट 6% इज गिवन 3000 100% इज कमिंग 50,000 50,000 इज द राइट आंसर दैट इज आवर प्रिंसिपल क्लियर जीवा में द लास्ट वेराइटीज दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ए पर्सन इन्वेस्टेड 12,000 rupees partly at 5% per annum and rest at 15% per annum. After 3 years, he received a simple interest of 3,000. Find the money invested lower rate of interest. Lower माने कोटा ना 5% आउच lower rate. एटा पचार ए पार्टा में एक्स नहीं गले ट्रेडिशनली फास्ट करदे कॉन्सेप्ट मेथड रे तापर में शॉर्ट मेथड्स को जीवा एक्स रुपीज इन्वेस्टेड लोयर टा हूँ 5% टाइमिंग लिखा है ना 3 years एक्स इंटू 5 into 3/100 प्लस रेस्ट को लिखा चलो 10 केते 12,000 लिखा है 12,000 minus x rest la 12,000 minus x then rate लिखा है 15% into 3 years okay x into 5 into 3/100 plus 12,000 minus x into 15 into 3/100 that is given 3,000 rupees टिके लंबा हम सॉल्व करदे कॉन्सेप्ट मेथड रे आंसर पाइबा में 8,000 ये एक्स मेथड्स आम सॉल्व कले दैट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग आम रेस्ट जीवा हाउ टू सॉल्व इट फास्टर कहीं इक्वेशन आम लिखिदेले कैलकुलेशन टाइम लगे सो टू अवॉइड दिस कैलकुलेशंस वी हैव ए शॉर्ट मेथड्स जीवा चला शॉर्ट मेथड्स and that method is known as allegation method that is allegation methods total investment money given 12,000 partly invested 5% partly invested 15% allegation methods is an assumption methods आम assume करिबा if all money is invested 5% per annum केते टंका पाइबा वर्ष को
ऑल मनी इज इन्वेस्टेड 5% पर आनम हेले वर्ष केते पाइबा ना 12×5 = 60 टंका पाइबा। सिमिलरली इफ ऑल मनी इज इन्वेस्टेड 15% पर आनम केते पाइबा 12,000 रो 15% होचे 1800 टंका। प्रकृत रे पाइचंदी केतना 3000 केतना 3 वर्ष रे वर्षु केते हबो 3000/3 हजार टाक लेख मझिरे आउ थे कौच इफ ऑल मनी इज इन्वेस्टेड 5% पर आनम 600 टंका पाई थांते। इफ ऑल मनी इज इन्वेस्टेड 15% पर आनम 1800 टंका पाई थांते। पाइचंदी किंतु केते 3 वर्ष रे पाइचंदी 3000 वर्षु खेला 1000 टा मझिरे लिखिदेले। जदि तुम इच्छा हुए मझिरे 3000 लिखा चलो किए मना कला कि चलो जदि मझिरे 3000 लिखो या भी 3 टाइम्स करदेव 1800 या भी 3 टाइम्स करदेव 5400 3 टाइम्स 3 इयर्स देन 1 टाइम 1 ईयर आज यू लाइक देन ए दुटा डिफरेन्स केतला देख डिफरेन्स लॉजिक होची ओनली बिगर माइनस स्मॉलर जी बड़ हेले चलो एमान भितर 1000 बड़ अच्छे 1000 माइनस 600 हूँ 400 एमान भितर किए बड़ अच्छे ना 1800 रो 1000 गला 800 नाउ द रेशियो इज कमिंग हाउ मच 800 400 रेशियो दैट इज कमिंग 2:1 800 400 रेशियो इज कमिंग 2:1 आम 12,000 को 2:1 ने स्प्लिट कर देले दिस इज कमिंग 8,000 दिस इज कमिंग 4,000 8,000 4,000 स्प्लिट हो गला एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द मनी इन्वेस्टेड लोअर रेट मान हूँ 5% हूँ लोअर रेट 5% तले केते लिखा है ना 8,000 8,000 इज द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बुझा पड़ा। समटाइम्स बेले बेले क्वेश्चंस कौन करे ये सिंपल इंटरेस्ट न दे लिखिदे अमाउंट लिखिदे लिखाई अमाउंट लिखाई ए लाइन रे 15,000 खाली इतनी खाली चेंज आउ किसी चेंज कर न ए पर्सन इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज पार्टली 5% पर आनम रेस्ट 15% पर आनम आफ्टर 3 years he received a total amount of 15,000 लिखाई ताले आम कौन करवा से केस रे यदि अमाउंट लिखाई ताले अमाउंट जो लिखाई 15,000 आकृति बाई 3 करदे 15,000 बाई 3 करके लिखिदे 5,000 मझे भूल हो बिकज दिस इज अमाउंट गिवेन तो 15,000 अमाउंट रु 12,000 टंका माइनस आगे करदे देन 3,000 पाइला में इंटरेस्ट 3 years रे इयरली आसो केते ना 1,000 बुझला जदि अमाउंट देथिबो अमाउंट रु प्रिंसिपल टा माइनस क्लब जो फिगर पाइला दैट इज योर इंटरेस्ट 3 वर्ष रे सेतिक इंटरेस्ट वर्ष केते राइट डाउन हियर इन दिस मिडल ओके थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू दैट्स अबाउट दी some questions belongs to simple interest next coming classes we'll discuss some questions belongs to compound interest okay thank you again